to science class of 7th. Today we will be discussing the exercises and question answer of the chapter number 4 heat. ठीक है? In our previous video we completed the chapter. So let's get started. First of all, you have to write about the chapter. What is about the chapter? The chapter is about the heat, transfer of heat and good and bad conductors of heat. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हीट के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज हीट, हाउ टू मेजर हीट, देन ट्रांसफर ऑफ हीट एंड द गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके, आफ्टर दैट वी विल राइट द की टर्म्स. की टर्म्स में सबसे पहला हीट. व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सेकेंड इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक. Then thermometer, it is a device or instrument used to measure the temperature of an object. Then conduction, it is the transfer of heat from the hotter part of a material to its colder part without the movement of material. ठीक? And it usually takes place in solid. Then convection, it is the transfer of heat from the hotter part of a liquid to its colder part by the movement of the liquid itself. ठीक है, और ये किस में होता है? लिक्विड में होता है. Then third is radiation, transfer of heat from one body to another body without affecting the medium, यानी कि ये वैक्यूम में होता है. Okay. The next term is clinical, related to medical or the doctor. Then graduation, marking out in degree. ठीक है. Then conductors, the materials which allow heat to pass through them are called as conductors or good conductors. ठीक है. Then insulators, the materials which do not allow heat to pass through them are called as insulators or bad conductors. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? You will put the date, you will write the chapter number, chapter name, सबसे पहले about the chapter, then आप लिखेंगे key terms of the chapter. ठीक है. Then वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है. आफ्टर वेरी शॉर्ट, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ नोट्स, जो कि आपको ग्रुप में मिल जाएगा. ओके. एंड आफ्टर दैट एमसीक्यू दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 61 एंड 62, क्वेश्चन 56 टू 75 दैट यू हैव टू डू इन द बुक इटसेल्फ. आपको बुक में ही करना है. देन कम टू हॉट्स, दैट इज higher order thinking skill questions, that is given on page number 62, question number 76 to 80. that also you have to do in the book itself. आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है. कॉपी में सिर्फ आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग करना है. ठीक है. अबाउट द चैप्टर करना है, देन की टर्म्स ऑफ द चैप्टर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट द समरी दैट यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ. ओके. Now I will be discussing the very short exercises of the chapter. जो very short question answer है उनको मैं डिस्कस करूँगी, और लॉन्ग और शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे नोट्स. ठीक है. So let us start with our very short question types. First one is name the SI unit in which temperature is commonly measured. The answer is degree Celsius. Then second is what is the normal temperature of human body on Celsius scale? That is 37 degree Celsius. Then third, what is the usual temperature range of a laboratory thermometer? Answer is minus 10 degree Celsius to 110 degree Celsius. Then question 4 is name the liquid which is commonly used in making thermometers. Answer is mercury. Okay. Then question number 5th, what prevents the mercury level in the glass tube of a clinical thermometer from falling on its own when its bulb is removed from the mouth of a patient? The right answer is kink or constriction. ठीक है. Then question number 6 is what is the name of the thermometer which has a temperature range? First one is from minus 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. ये किसका होगा? लेबोरेटरी थर्मोमीटर. देन बी फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, दैट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक. देन क्वेश्चन 7, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ यूजुअली 2 टेम्परेचर स्केल्स मार्क्ड ऑन इट्स ग्लास ट्यूब. नेम दीज 2 टेम्परेचर स्केल्स. तो 2 टेम्परेचर स्केल होते हैं. पहला है सेल्सियस स्केल
and second one is Fahrenheit scale. ठीक है. Then question number 8. What is the range of a clinical thermometer on Fahrenheit scale? तो ये क्या है? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 9. What is the normal temperature of human body on Fahrenheit scale? It is 98.6 degree Fahrenheit. ठीक है. Then come to question number 10. What is the name of those thermometers which do not use mercury? तो कौन से थर्मोमीटर है? डिजिटल थर्मोमीटर्स. Then question number 11. Name the thermometer which can automatically record the highest and lowest temperatures reached during the whole day. तो highest के लिए क्या होता है? मैक्सिमम और लोवेस्ट के लिए मिनिमम. तो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर इज द राइट आंसर. Then question number 12. Name 3 ways in which heat can flow or transferred. तो 3 ways क्या है? Conduction, convection and radiation. Then question number 13. When one end of an iron rod is heated, its another end also becomes hot soon. Name the process by which heat flows in the iron rod. The right answer is conduction. ठीक है. Then 14. Name the process by which a frying pan transfers heat from the gas stove through its bottom to the food kept inside it. Then the right answer is conduction. ठीक है. Then question 15. When does the flow of heat from a hot object to a cold object stop? कब heat stop हो जाता है? When two objects attain the same temperature. जब दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो कोई भी हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा. देन क्वेश्चन 16. व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट? दैट इज इंसुलेटर्स. ठीक है. देन 17. नेम द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड विद इन ए लिक्विड और गैस? दैट इज द कन्वेक्शन. ठीक. देन क्वेश्चन 18. स्टेट वेदर वाटर इज ए गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है. तो राइट आंसर होगा गुड कन्वेक्टर ऑफ हीट. देन 19. नेम द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ ए लिक्विड इटसेल्फ. इसका भी आंसर होगा कन्वेक्शन. देन क्वेश्चन नंबर 20. नेम द प्रोसेस बाय विच ए वाटर इन ए बीकर गेट्स हीटेड बाय द बर्नर केप्ट बिलो इट. तो कौन सा प्रोसेस होगा? कन्वेक्शन. ठीक. देन बी एयर अबाउ द कैंडल फ्लेम गेट्स हीटेड. ये भी कन्वेक्शन होगा. Then question number 21. Name the 2 types of breeze which flow in coastal areas. The right answer is land breeze and sea breeze. Then question 22. Which of the following method of heat transfer will work in empty space or vacuum? Convection, radiation या conduction? The right answer is radiation. Then 23. Name a method of heat transfer which does not require a material medium. The right answer is radiation. Then question 24. State the method by which heat is transferred. A. From the sun to the earth, that is radiation. Then from a man's hand when placed on cold iron vessel, that is conduction. Then C. From the bottom of a hot liquid to its upper cooler parts, that is convection. Okay. Then question number 25. A person sitting in front of a room heater feels hot. Name the process by which heat is transferred. तो इसका आंसर क्या होगा? Radiation. ठीक. Then how does the heat from the sun reach the earth? तो आंसर is radiation. Question 27. When we stand next to a burning fire, we can feel the heat on our face. Name the process by which heat is transferred from fire. That is also radiation. Then question 28. A hot utensil kept away from the flame cools down by transferring heat to surrounding. Name the process of heat transfer involved. तो क्या होता है? हॉट यूटेंसिल अगर हम फ्लेम से दूर रखते हैं और फिर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है? Answer number 28 is radiation. Following is a better reflector of heat and which one is a better absorber of heat? तो shiny white surface जो है वो better reflector of heat है and dull black surface that is better absorber of heat. Now we will proceed to question number 13. ठीक है. First one is fill in the blanks with suitable words. A cold
steel spoon is dipped in a cup of hot milk, it transfers heat to the other end by the process of conduction. Then B, in solids, heat is transferred by conduction. Then C, the two examples of insulators of heat are wood and plastic. Then D, air is a bad conductor of heat whereas copper is a good conductor of heat. Then E, feathers and furs keep birds and animals warm during cold weather because they have air trapped in them. ठीक है. Then F, the hotness of an object is determined by its temperature. Then temperature is measured in degree Celsius. Then H, temperature of boiling water cannot be measured by a clinical thermometer. Then I, no medium is required for the transfer of heat by the process of radiation. Okay. And J, in liquids and gases heat is transferred by the process of convection. ओके तो ये आपके हो गए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ग्रुप में नोट्स मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. आपको वो करना है और उसके बाद एमसीक्यू और हॉट्स जो कि क्वेश्चन नंबर 56 से लेके 80 तक है वो आपको बुक में ही करना है. एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट द समरी. ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.